happy. So today we are going to begin with the lesson number 9 of your class 6 English grammar, that is pronouns and kinds. So let's begin with this lesson. What are pronouns? Words which are used in place of noun are called pronouns. जो words हम noun की जगह पे use करते हैं उनको हम pronoun कहते हैं. किस लिए use करते हैं? Repetition को avoid करने के लिए. For example, you, he, him, her, whose, etc. हम इनको यूज कर देते हैं नाउन की जगहों पे. Like read the following sentence. Teju was angry with Sheena. He said that she should not have teased the dog. Here he stands for Teju and she stands for Raju. Both the names are nouns and thus the words he and she are pronouns. ये दोनों words क्या है आपके nouns है और he और she हम जो यूज करें वो क्या है आपके pronouns है. Now तेजू और शीना तो आपके नाउन हो गए और उनकी जगह हमने ही और शी लगा दिया. That is pronouns. Now there are 9 kinds of pronoun. First one is personal pronoun, second is interrogative, third is demonstrative, fourth is possessive, fifth is indefinite, sixth is reflexive, and seventh is empathetic, eighth is distributive, ninth is relative pronoun. Now personal pronouns क्या होते हैं? Personal pronoun which stands for a person or thing is called a personal pronoun. जो एक particular pronoun that stands for a particular person or thing, एक person or thing के लिए जो बात करते हैं उसको हम personal pronoun कहते हैं. Like there are 3 persons in a personal pronoun. 3 kinds होते हैं personal pronoun के. Like first person होता है, second person होता है और third person होता है. First कौन होता है? The first person is the person speaking, जो इस person बोल रहा है. और second कौन होता है? जिससे बोल रहा है. थर्ड होता है जिसके बारे में बोल रहा है. So the various forms of personal pronoun are first, second and third. Now use कैसे करते हैं इसको? सब्जेक्ट में कैसे यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट में, पजेसिव फॉर्म में और रिफ्लेक्सिव और एम्फेसिस फॉर्म में कैसे यूज करते हैं. इन सिंगुलर आई सब्जेक्ट में होता है मी, ऑब्जेक्ट में होता है पजेसिव में माइन हो जाता है, रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग में क्या हो जाता है माई सेल्फ. और प्लूरल में वी जब एक से साथ होता है वो प्लूरल होता है वी. us, ourself used for both masculine and feminine. myself और ourself आप मेल्स के लिए यूज कर सकते हो, फीमेल्स के लिए भी यूज कर सकते हो. सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर you, yours, yourself. So you, yours and yourselves. So used for both males and females. Now third में क्या होता है? थर्ड पर्सन में सिंगुलर में क्या होता है? he, she, it और they होता है. प्लूरल में is, she होता है, प्लूरल में सी, सिंगुलर में इट एंड प्लूरल में दे. देन सो ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ. मैस्कुलिन है आपका ही. शी क्या है आपका? शी, हर, हरसेल्फ, हर्स, हरसेल्फ. वो क्या आपका? फेमिनिन है. शी हम फीमेल्स के लिए यूज करते हैं. इटसेल्फ ये क्या आपका? न्यूटर है. न्यूटर प्रोनाउंस के लिए और न्यूटर जेंडर के लिए यूज करते हैं हम. They, them, theirs, themselves. ये क्या हम all genders के लिए use कर देते हैं but in plural. Now a noun for which a person stands is called antecedent. A noun जिस person के लिए stand करता है उसको क्या कहते हैं? Antecedent कहते हैं. Like a pronoun must agree with its antecedent in its number, gender, etc. किससे agree करना चाहिए? उसके number में, gender में, antecedents के साथ agree करना चाहिए. Now interrogative pronouns क्या होते हैं? जिसमें हम questions put up करते हैं. An interrogative pronoun is used to ask a question like who told you a story, what do you want, whom do you want to speak to. In the above sentence the pronouns who, what, whom are used to ask question. किस लिए यूज हुआ है? क्वेश्चंस आस्क करने के लिए. Therefore they are called interrogative pronouns. इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? Interrogative pronouns कहते हैं. Who is used for asking question about person. किस लिए यूज होता है? क्वेश्चन पूछने के लिए पर्सन से. What is used for things only. What खाली things के लिए use होता है. Now demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns are used to point out the object to which they refer. जिससे वो refer करते हैं. Like that is your car. This is a big house. These are his dresses. These are beautiful fans. Now the word this, that, these, those are used to point out the object. किस लिए use होता है? Point out करने के लिए objects को. Therefore they are called demonstrative pronouns. इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? Demonstrative pronouns कहते हैं. This and that are used in singular number. This और that किसमें use होता है? Singular number में use होता है. These and those are used in plural number. These और those आपके plural number में use हो जाता है. Yes. This and these are used to refer to things in near to hand. जो चीज हमारे बिल्कुल हाथ के पास होती है. This और these हम उनके लिए use कर देते हैं. That and those refer to things lying at a distance. That और those जो चीज हमसे बहुत दूर लाइट है उनके लिए हम use करते हैं.
Now let's talk about possessive pronouns. Possessive pronouns क्या होते हैं? जो possession दिखाते हैं, जो ownership show करते हैं. Like possessive pronoun shows possession. That pen is yours. ये पेन तुम्हारा है. Ownership भी show कर रहा है, possession भी show कर रहा है. This book is mine. ये book मेरी है. That is theirs. That toy is hers. So mine, yours, hers, theirs show possession. क्या show कर रहा है? Possession show कर रहा है. They are used in place of noun. Yes, हमने ये कहाँ पे use करे? This, that, these, those. किसके? Mine, yours, hers, theirs हमने किस लिए use करा है? हमने nouns की जगह पे use करे हैं. So study the following table which show possessive pronouns and possessive adjective. Like first person, second person and third person. Possessive adjective में क्या होता है? Possessive pronouns में क्या होता है? Singular में. फर्स्ट पर्सन में माई का क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है. पॉजेसिव प्रोनाउन माइन हो जाता है. सेकंड पर्सन में पॉजेसिव एडजेक्टिव इज योर एंड पॉजेसिव प्रोनाउन भी योर ही होता है. और थर्ड पर्सन में हिज ही रहता है. हर हर्स हो जाता है. प्लूरल में क्या होता है? माई का पॉजेसिव एडजेक्टिव आर हो जाता है. आर्स हो जाता है प्रोनाउन. योर का योर्स हो जाता है. देयर का देयर्स हो जाता है थर्ड में. नाउ इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? Indefinite pronouns are those pronouns which refer to person or things in a general way. जो person और things in general way में refer करते हैं. Like they do not refer to any particular person or thing. Particular person or thing से जो refer नहीं करते, किसी particular चीज के बारे में बात नहीं करते. That's why they are called indefinite pronouns. Now examples क्या है? All were satisfied. मतलब सब satisfied थे. Particular चीज के बारे में, particular person के बारे में बात नहीं कर रही. None of these mangoes is ripe. कि इनमें से कोई मैंगो भी पका हुआ नहीं है, राइप नहीं है. इस पर्टिकुलर मैंगो के बारे में बात नहीं कर रहे. Somebody has stolen my pen. Many of these eggs are rotten. So the words all, none, some, several, both, few, many, each, other, each, either, neither, anyone, everyone, someone, everybody, nobody are usually used as indefinite pronouns. Indefinite pronouns की तरह यूज होते हैं. Reflexive pronouns क्या होते हैं? Reflective pronouns relate a noun to a group of words that follow, like I injured myself, they blamed themselves, she blamed herself, the child hurt herself. So a reflexive pronoun is formed by joining self or self. कैसे form होता है? Self और self को join करके. So to some pronouns or a suffix. किसी pronoun में suffix में self और self लगा देते हैं. Like self is suffix to singular pronouns and personal pronoun में क्या लग जाता है? Self लग जाता है to plural pronoun. Now singular myself का क्या? My plus self is equals to myself. Him plus self is equals to himself. Her plus self is equals to herself. It plus self is equal to itself. Your plus self is equal to yourself. And plural में क्या होता है? Our, them, your का होता है. Like ourselves, themselves, yourselves. Now the following tables show how personal pronoun take reflexive pronoun. Like singular and plural में क्या होता है? First person personal will be I, reflexive will be the myself. Second person you, yourself. Third person he, himself, she, herself, it, itself. Personal और reflexive plural में कैसे होता है? We का हो जाता है ourself, you, yourself, they, themselves. Now emphatic pronouns क्या होते हैं? जो emphasis show करते हैं. Like a pronoun used to emphasize, emphasis is called is emphatic pronoun. Like you yourself like those shoes. तुम्हें अपने आप वो shoes पसंद आए. We ourselves climbed the tree. हमने अपने आप climb करी hills. So he himself told me about it. We ourselves saw the monkey. Now an empathetic pronoun cannot function as a subject. एक subject की तरह function वो नहीं करता. Like a pronoun that refers to person, place or thing at a particular time is called distributive pronouns. जो एक particular person or place or thing से refer करता है तो उसको क्या कहते हैं? हम distributive pronoun कहते हैं. Like each of them got a prize. मतलब सबको हमने एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर ली. Each of them हर किसी को प्राइज मिला. Neither of them came to see her. कोई भी उसको इनमें से कोई भी उसको देखने नहीं आया. Neither of them. So हर एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो गई. Either of the two roads lead to Delhi. So each, either और neither ही क्या होता है? खाली आपके ये three words ही होते हैं. Distributive pronouns. Now relative pronouns क्या होते हैं? The pronouns such as who, whose, whom, that which join two sentences. We join करते हैं two sentences को and refer back to nouns growing before them. और किस तरह करते हैं? Noun से. Like such pronouns are called relative pronouns. इन pronouns को हम relative pronouns कहते हैं. Who, which, that are the words most
frequently used as relative pronouns. कैसे यूज होता है frequently relative pronouns की तरह यूज होता है like as a rule who, whose, whom is used for persons only. who खाली हम persons के लिए यूज करते हैं like I met Amar. Amar stood first in the class. I met Amar who stood first in the class. Which is used for things without life and for animals. जो animals के लिए हमने which यूज करते हैं और जिनमें कोई life नहीं होती things के लिए यूज करते हैं. Like Priya has found a bangle. Priya has found a bangle. She had lost the bangle. Priya has found a bangle which she had lost. So that is used for both person or thing. Persons or thing के लिए हम that use करते हैं. I know the bungalow. He lives in a bungalow. I know the bungalow that he lives in. I lost the pen my teacher has given me. I lost the pen that my teacher has given me. Joining sentences with relative pronouns. कैसे join करते हैं relative pronouns से sentences को? We can use relative pronouns to join sentences. Look at these examples. First, I saw a boy. He was wearing a funny dress. I saw a boy who was wearing a funny dress. Join कर दिए sentences को. Dr. Radhakrishnan was the second president of India. He was a great scholar. Dr. Radhakrishnan, who was the second president of India, was a great scholar. This is the child the government has given him a bravery award. This is the child whom the government has given a bravery award. So these people need our help. They lost their houses in the earthquake. These people who lost their houses in the earthquake need our help. The train was already left. We wanted to catch it. The train which we wanted to catch it had already left. So that's all for this pronouns. I hope you all like the explanation of this chapter. Thank you and have a great day.